Yes, sir. Yes, Excuse please, me, please. sir. We'll start in 3 minutes. So in the meanwhile, please share something from Bhagavad Gita. What did you learn in the previous class? Yeah. सर Yes. सर श्लोक के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. हाँ हाँ, आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, बट स्पेशली जो इम्पोर्टेंट श्लोकास है ना, जो हम लोग यहाँ पे वी विल ट्राई टू कवर द इम्पोर्टेंट श्लोकास, बट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द ऑल द श्लोकास purport and the translation. You don't have to remember the slokas. You just go through the translation and purport of the each slokas. Okay, good. Yeah, Pankaj Kumar, would you like to share something? You have raised your hand. सर हम कितने श्लोक करेंगे? Today, आज. नो माँ, नो सर. जो कंपटीशन होगा उसमें हमें हाँ कितने हाँ, श्लोक याद करना है? जो वी हैव प्रोवाइडेड यू ना, हम लोगों ने एक बुक प्रोवाइड किया है ना, इलस्ट्रेटेड भगवत गीता करके, पीडीएफ आप लोगों के पास गया होगा ना. यस सर. So please try to cover all those slokas, okay, which is there in the that PDF. ओके Excuse सर. me, sir. सर एक्सक्यूज मी. Yes, सर ma'am. मुझे वो पीडीएफ नहीं मिला था. Sir, today was just we first class. Okay. She doesn't attend any more class, last class. Okay, no problem, no problem. If you haven't attended the previous classes, what you can do is you just go through the book. There are only very few slokas, important slokas, which is mentioned in the illustrated Bhagavad Gita, and so you can go through. If you have any doubt, you can ask in the next class, or if you have what you Which have book, WhatsApp sir? group, right? कौन सी बुक This मतलब रिकमेंड कर रहे हैं? okay, okay. जो illustrated भगवत गीता के आप लोगों के पास पीडीएफ गया होगा. If you check website ना, the Gita Anushilam course, so in there it's mentioned. And if you also you have might have received in your WhatsApp groups. Tarun Prabhu, could you please No, sir. clarify? हाँ First प्रभु जी, class, sir. I we can also, I am also sending the link in the chat box also. So if no have someone is new, he can get it. Yeah, please, please share. And they are in the WhatsApp group, right? व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे सर? Tarun Prabhu? आपने क्लास तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ही हुआ ना, व्हाट्सएप में ही तो लिंक भेजा था. हाँ, बट कोई तो पीडीएफ और ये जो आप बोल रहे हैं वो कैसे मतलब मिलेगा वो लास्ट क्लास मिलेगा का? आपको, वो मिलेगा जो गीता अनुशीलम की वेबसाइट है, वहां पे जी. जाना है. और फिर वहां पे जो कंपटीशन में है, वो कंपटीशन के लिए जाना है. फिर आपके एज ग्रुप पे जाना है, जो बच्चे का एज ग्रुप है, और फिर वहां अच्छा. पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा. क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ है ना, सो वी कांट सेंड ऑन व्हाट्सएप. देयर ओके. आर लॉट्स ऑफ पीडीएफ. सो ठीक है. यू हैव टू गो टू वेबसाइट टू गेट द पीडीएफ. ओके सर. ओके. ओके. Great. So he has shared, Tarun Prabhu has shared the link. Please follow the link if anybody doesn't have the PDF. And please download it. Okay, so we'll start. Okay, we'll start सर हम now. बना Yeah, के भेज या उसको ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी? हम अभी स्क्रीन कर देंगे, हम प्रेजेंट कर देंगे. मैं भी प्रेजेंट करता हूँ, मैं भी प्रेजेंट करूंगा when we start. गुड मॉर्निंग सर. गुड इवनिंग सर. Good evening. Am I audible? या सर. Yeah. Do you have any doubt? Do you have any question? नो सर. Okay, so we'll start now. ओके ओके. Can you see my screen? नो सर. गुड मॉर्निंग सर. Wait a second. Can you see the screen now? यस सर. यस सर. Okay. Okay, good. यस सर. Great. यस सर. Okay, okay, okay. Now, गुड इवनिंग सर. good evening.
My screen again. Good evening, sir. Yeah. Good evening. Good evening, सर sir. सर मैं लिया है. सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही. हाँ हाँ, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ. जस्ट वेट ए सेकेंड. ओके. Now can you see my screen? Yes, sir. Yes sir. Okay, good. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, Tarun, shall we start from chapter 3 or chapter 4? Actually, third chapter is covered, but now if the students are saying so, you can just go through it, Prabhu, as soon as possible. Okay, okay, Prabhuji. So please unmute mute yourself, everybody. Now we'll start, and once I ask to unmute, then please unmute yourself. Now please mute everybody. Okay, so we'll start from chapter 3, important slokas. And so we are reading from illustrated Bhagavad Gita. So I hope everybody has this book, and if not, Prabhuji has shared the link. So everybody please go through that and download the book after the class. Okay, so I will start, I will recite, and then after you can also recite with me. But please mute yourself, keep mute. Okay, yeah. यज्ञाहर्तात् कर्माणो अत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तद् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. I will repeat once again. यज्ञार्थात् कर्मणो अत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तद् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. Anybody would like to recite? Please unmute yourself and recite if anybody would like. Sir, you can recite once again. Okay, sure. यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तद् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. Now कोई आएंगे रिपीट करेंगे रिसाइट. Sir, can I repeat? Yes, please. Sir, I can repeat. Jnat कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता संज्ञचमाचर. Very nice. Anybody else? Sir, can I repeat? Yes, please. यज्ञार्थार्कर्मणो यन्त्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. Very nice. We'll move now. Anybody would like to read the translation? Those who haven't read. Sir, can I read? Sir, can I? Yes, please. Sir, Yeah, please read. sir, may I? Yes, Sir, please shall read. I? Please. Work done with a sacrifice for wisdom has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your Passes duties for his satisfaction, and in that way you will always remain from bondage. Okay, very nice. Thank you. Okay, so now we'll try to read our explanation. And now we'll I will give you also next time. So please, now I will read the explanation. So I will explain you this verse. So the explanation says, we all have to work just to keep our body alive. Excuse But me. if you, yes, Sir, which adhyay? it's third chapter, sloka number 9. Third chapter, third chapter, slok number 9. Yes, you can see here text 3.9. Okay, so I we'll can't explain. find. Sir, Okay. Uh,
So, but if we work for hours on satisfaction, that gives us karmic reactions, good or bad. If we work for Vishnu, called yagna or sacrifice in this verse, then our work will not have material reactions. We will be liberated when we work for Vishnu. This is called the art of work. In the beginning, we should learn how to work for Vishnu and Krishna himself, as Arjuna did, or from Krishna's devotee. So, Krishna is trying to explain here. Yes, हमें किस अध्याय के श्लोका को रीड करना है? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, थर्ड पॉइंट चैप्टर. So हाँ सर. please follow this what I'm trying to explain it to you. So you don't have to open anything right now. You just look at the screen. I'm trying to read here. Okay, I am going to explain this verse 3.9. Okay, good, good. So Krishna is trying to explain. Krishna is explaining to Arjuna that what we have to do. We have to just work for the Krishna. Whatever we do, we have to do for Krishna, or Vishnu has to be performed. Otherwise what happens is we will cause, it will cause reactions, it will cause bondage in this material world if we don't perform our work according to scriptures, or according to what Krishna is trying to explain here. So we will be, we will have reactions for all the work which we will do, here. So that is why here Krishna is saying to Arjuna that, "O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage." What it means here is, भगवान बता रहे हैं कि जो भी हमें करना है ना, वो भगवान के अकॉर्डिंग करना चाहिए, और सब कुछ भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए करना चाहिए, ना कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए. भगवान के लिए हमें जब हम भोग बनाते हैं ना, भगवान को ऑफर करते हैं, देन वी हैव द रेमनेंट्स ऑफ प्रसाद, देन वी गेट प्रसाद, तो हम लोग प्रसाद पाते हैं. तो वैसे ही करके ना, हर एक परफॉर्म, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें भगवान के लिए पढ़ना चाहिए. हमें हमें कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं ना, तो हमें वी हैव टू डू फॉर Krishna satisfaction. We have to please Krishna. In that way what will happen is we won't be, we won't be, हम लोग बॉन्डेज जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, कॉजेज बॉन्डेज, फिर हम लोग वो रिएक्शन जो हर एक हम लोग पढ़े होंगे, हम अभी इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे कैसे हर एक जो हम वर्क करते हैं ना, एवरी वर्क हैज इट्स रिएक्शंस, व्हाट एवर वी डू. बट इफ यू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू कृष्णा सेटिस्फैक्शन, सो कोई भी हमें उसके अनुसार फिर हमें कोई रिएक्शंस नहीं मिलते हैं. सो दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज परफॉर्म आवर ड्यूटीज to satisfy Krishna, not ourselves, not our senses. We have to satisfy Krishna's senses. Like see here, यहाँ पे कैसे भगवान को यहाँ पे ना आरती हो रहा है. सी इज ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा, एंड सी इज doing devotional service. So we should try to do all the activities to please Krishna only. And other than that, we shouldn't do anything that will cause bondage, in this material world. So what will happen, as a result, we will be in this material world again. We will stuck in the cycle of birth and death. We studied in the second chapter. So similarly here you can see that here is a devotee who is praying, to God, and you can see all the other persons, they are doing their own job. But we should remember that we should always do, we should always perform our all the activities to please Krishna, to satisfy Krishna. Remember this. So that is also, it is written, it is mentioned here, a person who works for his own benefit is always in anxiety, but a devotee who works for Vishnu remains happy and free from karmic reactions. So that is why, we should always try to perform our activities, to satisfy Krishna. अगर अब ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि हमें ना उससे चलते हमें एंग्जाइटीज होंगे, हम परेशान रहेंगे, बहुत परेशान रहते हैं. हमारा हमारा स्टडी छूटा हुआ है, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, ऐसा सोच के ना we always stays in anxiety. So that is why we should perform all our activities to please Krishna. So we'll now move to the next slokas, which is 3.13. I will repeat, I will recite, then you can recite after this. Yagna sisthasina santo muchyante sarva kilvise bhunjate teve aggam papa ye pachanti atma karanat. I will repeat. यज्ञसिष्ठानि सन यज्ञसिष्ठासिना सन्तो
मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वअघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्. Anybody would like to recite? हरे कृष्णा. कोई रिसाइट करना चाहेंगे? Sir, can you recite one more time? Yes, sure. यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वअघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्. Sir, can I say? Yes, please. Sir, can I say? Yeah, please repeat. Please recite. यच्चाशिना सन्ता सन्तो मुच्यते सर्व किल विषये भुज्यते तव पापाय पंचत्य तक मारताडे. Okay, very nice. We'll move to the translation. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. So that is why, this is explained here in this again in this sloka. What? That the devotees of the Lord are released from all kinds of sins. That's why I was discussing the previous sloka. If we, try to satisfy our own senses, so that's what here also written, who prepare food for personal sense enjoyment, then what will happen? We will be, always incur sins. We will be full of reactions. That's what we are trying to, if we try to enjoy ourselves, if we don't try to satisfy Krishna. That is why devotees of Krishna, that is it's written here, you can see here, the devotees of the Lord are released from all kinds of sins. भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको कोई भी पाप नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि first the devotees offered prasad bhoga to Krishna, and then the remnants of the food, then it becomes prasad. Then we eat only prasad. So that is why we are free from, all kinds of sins and reactions. So that's why it's very important that we should offer, we should always try to please satisfy Krishna, and we should always eat prasadam. Please mute yourself, everybody. Yeah. So we should, always eat prasadam. We shouldn't eat without offering to the Lord, So remember that we should always eat prasadam. First offer to Lord Krishna, and then we will have remnants of it. Then we have it as a prasadam. So here you can see in this picture, it's showing here in the top picture, people are eating and distributing food that's been offered first to Krishna as a sacrifice. So here you can see, here it becomes a prasadam, and which are eating, which are, they are eating. But here if you see, they are cooking by themselves and they're eating, so they are doing sense enjoyment, so they are cooking and eating for their own pleasure. So which one will be good, the above one or the below one? Which is good? Tell me. This one, the Sir, top. the below I will repeat once again. I will repeat once again. So the first one is offered, but the second one is unoffered. They are having prasadam, but they are not. They are trying to cook and enjoy themselves. Which one is good, the top one or bottom one? Ma'am, first one. the top one. First. Sir, the top one. The top one. Good, very good. So the top one, because The top one. they have, they are eating prasadam. That is why this is good. This is not good. They're trying to enjoy themselves. So that is why we should always try to please Krishna, satisfy Krishna. So yeah, we'll move to the next sloka, 3.13. So yeah, so third chapter is completed here. So two slokas are very important from the third chapter. So now we'll move to the fourth chapter, which is very interesting. Okay, so now I will recite, then you can recite after me. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसयो विदु सकालेन महता योगनस्ता परंतप. I will repeat once again. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसयो विदु सकालेन महता योगनस्ता परंतप. Anybody would like to recite? Can I repeat? Sir, may I? Yes. Yes, please. Those who haven't read no previous time, please come ahead and read. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु साकल्यान्य महता योगो
नस्तः परात्मा Okay, very nice. Ivan parampara yogi sarai. Yeah, please recite. Ivan param ma ma pra prat prat एवं राज्य सयो विदुः इस कह लेने महता योग्य नष्ट परंतपा. Very nice. Sir, can I Okay. read? Sir, can I We'll give, I will give you from the next time. You read next sloka. Okay, we'll move because we don't have that much time. Okay, so read next slokas. I will explain. Okay, somebody read translation. Those who haven't read. Sir, shall I read? Yes, Sir, please. can I read? This Sir, can I read? This Yeah, Superman please read. science was thus received through the chain of disciplinary succession and saintly understood And the saintly kings understood it that in course of time See, this is not how it will work. Please mute all the participants, and please read only one person. It will be very difficult to follow. Okay, so I will explain now. I will read once again. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. So what happens? So if you go through book Bhagavad Gita, and if you read sorry, first slokas of fourth chapter, then there Krishna explains how Bhagavad Gita has started. भगवान श्री कृष्ण ने किनको सबसे पहले सुनाया था? सबसे पहले भगवान ने सूर्यदेव को सुनाया था. देन सूर्यदेव ने क्या किया था? उन्होंने मनु को सुनाया था. देन मनु व्हाट ही उन्होंने फिर किसको सुनाया? इक्ष्वाकु को. सो वैसे करके ना, इट्स ए गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन. सो इट्स अ चेन ऑफ सक्सेशन, डिसाइप्लिक सक्सेशन. इसीलिए इनको बोलते हैं गुरु परंपरा में ये आता है. मतलब कि कभी ये ब्रेक नहीं हुआ था. हर एक ऊपर से भगवान कृष्ण से ही आ रहा है ये भगवत गीता का नॉलेज. तो याद रखना, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस इज कमिंग थ्रू ए चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन. सो पहले क्या होता था कि सेंटली किंग्स को समझाया जाता था और वो लोग समझते थे. एंड बट इन कोर्स ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड दैट बहुत सारे, जैसे कि आजकल हम देखते हैं ना, व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल इज डिग्रेडिंग. एंड विल आल्सो रीड इन द अपकमिंग वर्सेस व्हाट इज हैपनिंग दिस डे. So here Krishna is explaining to Arjuna that this the knowledge of this Bhagavad Gita is coming through chain of disciplic succession. And but what happened in the course of time, this succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. So क्या हुआ बीच में कि ये जो डिसाइक्लिक सक्सेशन चल रहा था ना, चेन ऑफ डिसाइक्लिक सक्सेशन, वो ब्रेक होने लग गया ग्रेजुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम. और इसीलिए ये ऐसा लग रहा था कि एज इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट, खत्म होते जा रहा था. तो इसीलिए ना भगवान यहाँ पे आके फिर से अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं. तो हियर यू कैन सी दिस फिगर. यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम में यहाँ पे फिगर के रूप में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन द टॉप पिक्चर द साइंस ऑफ योगा इज बीइंग properly passed from guru to disciple. Below, the philosophy has been changed and people are not satisfied to hear from a bogus person. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखो, पहले के समय में क्या होता था ना कि एक गुरु रहते थे. हम लोग सबने गुरुकुल का नाम सुना होगा. तो पहले क्या होता था ना, गुरुकुल होता था and their spiritual guru used to give lectures to all the disciples. See here, the disciples are sitting very silently, calmly, and listening to the carefully to the gurus whatever he's trying to explain. But nowadays what is happening, in the today's generation, that nobody wants to hear properly, nobody wants to follow what guru is saying. And also these days, you know it's very deteriorating, the guru's disciplic succession. आजकल हमारा ना chain of succession खत्म होता जा रहा है. Please mute yourself everybody. Please mute yourself everybody. या वेरी गुड, थैंक यू. सो आज क्या हो रहा है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे गुरुकुल नहीं बचे, हमारे अब स्कूल्स हो गए हैं. बट अब हम आजकल देखते हैं ना, बहुत जो पहले के जो होते थे ना, ये मुनि होते थे, ऋषि मुनि गुरु होते थे, वहां पे ना बहुत अच्छे से डिसाइपल सुनते थे अच्छे से केयरफुली. वॉट एवर ही यूज टू से, दे यूज टू लिसन वेरी केयरफुली. बट नाउ इट इज दिस इज ब्रेकिंग.
deteriorating this guru disciple succession. So that is explained here. The Bhagavad Gita was originally meant especially for saintly kings who would use this knowledge to guide the citizens. Sometimes people change the original purpose. When this happened 5,000 years ago, Krishna again spoke this spiritual science to Arjuna. Even today, there are people who translate or explain Bhagavad Gita in ways that change the meaning. It is important that we hear and teach this knowledge properly, that then it will help all human society. So यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना, यहाँ पे explanation में बता रहे हैं क्या कि आजकल हम देखते क्या है ना कि भगवत गीता का ना बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, अपने 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 अनुसार से ना सब एक्सप्लेन करते हैं. बट व्हाट वी शुड रिमेंबर, वी शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल दैट वी शुड रीड ऑलवेज भगवत गीता एज इट इज, जो गुरु डिसाइपलिक सक्सेशन में आता है, जो हमारे इस्कॉन टेम्पल के, आप लोगों को पता है इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर आचार्य कौन है? एनीबॉडी? किसी को पता है हु इज द फाउंडर आचार्य? हाँ, Swami Srila Prabhu, teacher of Pandavas and Kauravas. Swami Srila okay. So I will tell you. So Guru of so Pandavas and Kauravas. no, I'm asking कि इस आप लोग जानते हैं ना इस्कॉन टेम्पल के बारे में? ISKCON. इस्कॉन टेम्पल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. Yes, So sir. who is the founder acharya of ISKCON temple? So I will tell you. He is Swami Prabhupada. very nice. Srila Prabhu. Very nice. Srila Prabhupada. So yeah, Swami Srila Prabhupada. so he has translated Bhagavad Gita. Now please mute yourself, everybody. Please mute yourself. Please mute yourself. Thank you. So Srila Prabhupada has translated the Bhagavad Gita. So we should read Bhagavad Gita as it is, written by translated and have purport by Srila Prabhupada. And we shouldn't read any other books, Bhagavad Gita version. So in this verse, he's trying to explain the importance of why Krishna spoke to Arjuna, gave the Bhagavad Gita lessons, because it was broken in between and it has to be spoken once again, and that is why Krishna chose Arjuna to give the Bhagavad Gita lessons, the knowledge of Bhagavad Gita. Okay, so we'll move to the next sloka, 4.7. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. I will repeat once again. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Please recite, anybody? जो लास्ट टाइम रिसाइट नहीं किए, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रिसाइट दिस श्लोका. Sir, can I? जो लास्ट टाइम रिसाइट नहीं किए, प्लीज वो रिसाइट करें. Okay, very nice. Between I couldn't hear anybody because आप लोग सब लोग मिलकर read कर रहे थे. So okay, we'll now read the translation. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Okay, so we'll read the explanation here. It's very interesting. Krishna, his incarnation or his representative son or devotee, comes to this world whenever real religion is disappearing. Real religion is explained in the Vedas and leads a person to surrender to Krishna. When Krishna incarnates to teach true religion, he teaches according to the understanding of people, according to understanding of the
people. Krishna always teaches the same principles, but they seem higher or lower because the people who are hearing them may be more or less spiritually advanced. When Krishna speaks to Arjuna, he presents the highest knowledge because Arjuna is very qualified. If we want to know whether someone is actually an incarnation of Krishna or a true representative of Krishna, we should check with the Vedic scriptures. All incarnations are described in the scriptures, so we won't be cheated by people who claim to be God. So here it's very, in important slokas we should remember that, भगवान क्यों आते हैं, भगवान कब आते हैं यहाँ पे हमारे हमारे साथ, क्यों कब कब आते हैं भगवान यहाँ पे, कब कब ट्रांसेंड करते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कब होते हैं. Whenever and wherever there is a decline, in religious practice, जब भी हमारे धर्म का ना पतन होता है, हमारे धर्म का डिटोरिएशन होता है, then भगवान हमारे आते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं. अभी नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे what he does after coming to this, material world, and what he does, why he comes. So we'll read the next verses also. So यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि जब और जहां धर्म की पतन होता है वहीं पे भगवान डिसेंड करते हैं, भगवान वहीं पे आते हैं. एंड नेक्स्ट लोग विल रीड कि वो करते क्या है यहाँ पे आके. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी हियर, लोग पीपल आर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ईटिंग समथिंग विच इज नॉट प्योर, people are gambling. So then this is called, deterioration of dharma. So there, and then Bhagwan descend here and try to, help those and try to establish dharma. So here it's very well explained in the next sloka. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. I will repeat once again. परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Okay, so anybody would like to, recite? Please come forward. Sir, Yes, please. Very nice. Very nice. Thank you. Thank you. So here it is explained. I will read the translation. To deliver the pious and to annihilate the miscreants. Prabhuji, please Yes, ask one person to recite at one time. Na? Yes, it's very difficult to, to balance, to control this audience. So it's request to everyone. You can raise your hand and Prabhuji will tell the name and he can only recite. Please So follow this the, way we can so do. it will be very better, it will be very good. Otherwise, this is become chaos. Yes. So please, from next time, please read only one person. I will, I will call the name of one person and then you read, okay? So I will move ahead. So here, to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. So what he is here, Krishna is explaining. लास्ट श्लोक का विल रेड ना कि भगवान कहाँ आते हैं. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों हर बार मिलीनियम आफ्टर मिलीनियम, मतलब युगों, हर एक युग में आते हैं भगवान. क्यों आते हैं? टू डिलीवर द पायर्स, जो शुद्ध, जो जो पायर्स व्यक्ति होते हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको डिलीवर करने के लिए. और जो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, जो पापी होते हैं, जो बहुत ही सिंफुल व्यक्ति होते हैं ना, उनको एनहिलेट करने के लिए, मतलब उनको खात्मा करने के लिए. और उसके बाद रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म की ना स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं. यही लिख रहे हैं यहाँ पे, भगवान बता रहे हैं आई माई सेल्फ अपीयर मिलीनियम आफ्टर मिलीनियम. तो हमने देखा क्या कि भगवान कहाँ आते हैं और कब आते हैं और क्यों आते हैं. 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ आते हैं, कब आते हैं और क्यों आते हैं. So remember that wherever and whenever there is a decline of, dharma, there God appears, and why? To deliver the pious and to annihilate the miscreants. जो पापी होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए, उनको संहार करने के लिए. और जो धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं, उनको
बहुत अच्छे से उनको हायर प्लान बेसिकली उनको डिलीवर करते हैं, मतलब क्या करते हैं ना, उनको मुक्त करने आते हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। तो जब पापियों को सर्वनाश कर देंगे और जो धार्मिक व्यक्ति होंगे उनको उद्धार करने आते हैं, तो क्या होता है ना, उससे रिलीजन का स्थापना होता है फिर से। Am I audible to everybody? Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. Okay, please mute yourself now. हाँ, so यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना, बहुत अच्छे से यहाँ पे डायग्राम फोटो यहाँ पे दिखाया गया। क्या लिखा हुआ है? कृष्णा कम्स टू किल डेमन्स, प्लीज द डिवोटीज एंड टू टीच अबाउट रिलीजन। जब हमने अभी पढ़ रहे थे क्या कि किसके लिए आते हैं? सबसे पहले आते हैं टू डिलीवर द पायस, जो धर्म के जो प्रचारक होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, उनको धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। सो और किस लिए आते हैं? और किस लिए अधर्म आते का हैं? नाश करने के लिए। और किस लिए आते हैं? साधुओं को बचाने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने भक्त को बचाने के लिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे? उद्धार करने के लिए। हाँ हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, बचाने के लिए। हाँ 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 हाँ, सुन लिया आप लोगों का, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को ना, यहाँ पे देखो कैसे डिलीवर कर रहे हैं, भगवान उद्धार कर रहे हैं अपने भक्तों को। और वैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे जो सिंफुल व्यक्ति होते हैं ना, उनको खात्मा करने के लिए, उनका मारने के लिए आए हैं और वापस से धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे बताया गया बहुत सारी चीजें। क्या लिखा हुआ? आई विल रीड, you listen. Lord Krishna loves his devotees and always helps them when they are in trouble. When the demons are harassing the devotee, Krishna comes in order to destroy the demons and help his devotees. However, the main reason Krishna comes is because his devotees want to see him in his pastimes. There are many types of incarnations, avatars, but Krishna is the source of all of them. In every yuga, Krishna incarnates. In this age of Kali Yuga, Krishna descends as Lord Chaitanya Mahaprabhu. In each incarnation, Krishna tries to teach the principles of God consciousness according to ability of the people to understand. In Kali Yuga, Lord Chaitanya does not kill the demons but tries to save them. He teaches the congregational chanting of holy name, which washes away all the dirt in the heart and gives one love of God. So यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान के ना बहुत तरह के अवतार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और क्या बोलते हैं ना, बहुत तरह के अवतार होते हैं, हम पढ़ेंगे बाद में जाकर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना कि हर एक युग, जो हम पढ़ रहे थे कि ही कम्स इन एवरी युगा डिसेंड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और जो कलयुगा में हमें, आप लोगों ने लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने हैं? हैव यू हर्ड ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? Yes, sir. No, sir. Okay, very nice. So he is the Kali Yuga incarnation of Krishna. He is none other than Krishna himself. So वही बता रहे कि हर एक युग में भगवान आते हैं। तो इस युग में हमारे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। और इस कलयुग में यहाँ पे हमें बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, हम लोग याद रखिएगा आप सब लोग, क्या कि इन दिस कलयुग वेयर इट इज रिटन दैट भगवान हर एक युग में डिफरेंट अवतार आते हैं और डिफरेंट चीजें टीच करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना कि लॉर्ड चैतन्य डज नॉट किल द डेमन्स बट ट्राइज टू सेव देम। और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि सबको चैंटिंग ऑफ होली नेम, संकीर्तन करने के लिए, संकीर्तन मूवमेंट के लिए आए थे, सबको होली चैंट करने के लिए। आप लोग को पता है हरे कृष्ण महा, मैम आवाज नहीं आ रही। कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आप लोग को ओके, वेरी नाइस। आप लोगों को महामंत्र पता है? आप लोग किसी को महामंत्र पता है? आप लोग प्लीज रिसाइट करिए एक बार। हाँ, प्लीज रिसाइट करिए, प्लीज रिसाइट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। हाँ, आप लोग सबको, आपको पता है, सबको पता है। तो भगवान ना, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ना, इसी संकीर्तन होली ने होली ने हरे कृष्ण महामंत्र। कैन यू हियर मी नाउ?
अब जा रहा है आवाज? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। द पर्सन इज दैट पर्सन्स माइक्रोफोन स्पीकर, आपकी आवाज आ रही है। Okay, Prabhuji, thank you. Okay, so we'll move to the next sloka, 4.9. जन्म कर्म च मे दिव्यम एमं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सर आपकी सोऽर्जुन. आवाज नहीं आ रही। Please check your microphone. Everybody can listen to me. Check your laptop or phone, whatever you're using. Okay, so we'll move. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. तो भगवान यहाँ पे क्या बताया? सर विच श्लोक? 4.9. 4.9। या सो या यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं ना कि जो भी लोग, ओके विल फर्स्ट आई विल शो यू दिस पिक्चर, यू नो, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि बहुत सारे लोग ना भागवत जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, द डाइंग मैन इज सराउंडेड बाय पीपल हु आर रीडिंग द स्क्रिप्चर्स अबाउट कृष्णा's appearance because he understands this, his soul has assumed his spiritual form and is boarding a spiritual airplane guided by Vishnu's associates, it will take him to Krishna's abode. तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे थे ना, जो भी मेरे को जानते हैं, you know, whoever knows me, whoever knows the transcendental nature of my appearance and activities, जो भी भगवान के पास टाइम्स होते हैं, वो भी भगवान के एक्टिविटीज होते हैं ना, उनको एक्चुअली लोग जानते हैं ना, ट्रांसेंडेंटल नेचर भगवान के अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज, वो क्या करते हैं ना, जब वो शरीर छोड़ते हैं ना, हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में कि वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, तो यहाँ भी बता रहे भगवान कि जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है देन क्या होता है उनका, वो उनको जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान के एक्टिविटीज और अपीयरेंस को जानते हैं ना, उनका अगेन मटेरियल वर्ल्ड में जन्म नहीं होता है, बट कहाँ होता है, सीधा भगवान की इटर्नल अबोर्ड। भगवान बता रहे हैं कि सब मेरे पास आ जाते हैं जो भी मेरे को जानते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे फोटो से दिखाया गया है ना, यहाँ पे फोटो बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, जो भी यहाँ पे ना, जो भी एक डेथ पेज पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्चर्स रीड करके सुना रहे हैं जो मरने वाले हैं, जो शरीर त्यागने वाले हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सीधा भगवान के धाम पहुंच रहे हैं। कौन लेने आ रहे हैं? भगवान के दूत, यू नो, विष्णु दूत इनको बोलते हैं। तो उनके विष्णु दूत लेने आए हैं इनको और भगवान के पास लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें ना भगवान के हर एक एक्टिविटीज को और हर एक अपीयरेंस को ना हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल समझना चाहिए। नॉर्मल नहीं होता है वो, ट्रांसेंडेंटल होता है। तो हमें हर एक चीज को ना भगवान के पास टाइम्स, भगवान के नाम, भगवान के यू नो जितने भी चीज करते हैं ना, हम सारे चीज सब कुछ ट्रांसेंडेंटल होता है। तो हमें वो सब सारे कुछ नेचुरल नहीं समझने, नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। वी शुड know that this all the things, all the appearances, pastimes, everything whatever we do is transcendental. So we will reach, you know, Krishna's abode. We will not be stuck in this cycle of death and again born and, you know, birth and death cycle. So that is what it is explained in the previous sloka 4.9. So we'll move to the 4.13. Chaturvarnyam maya srishtham guna karma vibhagasa tasya kartaram api mam vidya kartaram avyayam. I will read the translation. According to the three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet non-doer, being unchangeable. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. I will read the, you know, first the explanation, then I will explain this sloka to you. Everything is created by Krishna, including the four divisions of society: the intelligence class, Brahmanas; the administrative class, Kshatriyas; the merchant class, Vaishyas; and the laborers, Sudras. तो यहाँ पे ना फोर इंपॉर्टेंट भगवान ने ना क्या किया है, चार डिवीजन ऑफ सोसाइटी डिवाइड किया है. कौन कौन सा? ब्राह्मणास, विच इज ऑल्सो नोन एज, यू नो, द इंटेलिजेंस क्लास, and the administrative class, also known as Kshatriyas; merchant class, Vaishyas; and the laborers, which is also known as Sudras. So यहाँ पे ना फोटो के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे हम इसके थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे ना जैसे देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, भगवान ने चार वर्ण सोसाइटी को डिवाइड किया. पहला क्या है? सी, दिस इज इंटेलेक्चुअल पीपल, दोस हु रीड्स, यू नो, लर्न, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मणास. फिर यहाँ पे क्या आते हैं ना, क्षत्रिय. क्षत्रिय किसको बोलते हैं? जो क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल, जैसे कि हमें पता है ना, हमें देखते हैं जो पुलिस होते हैं, यू नो, पहले के जमाने में राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे, उन लोगों को बोलते थे क्षत्रिय, जो सब कुछ संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो करते हैं ना, उन लोग राजपूत होते हैं। हाँ, क्या बोलो फिर से आप? राजपूत होते हैं जो सर। नो नो नो, ऐसे नहीं याद करना राजपूत होते नहीं.
उनको बोलते हैं ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के होते हैं, जो संभालते हैं, राज्य को संभालते हैं। कौन संभालते हैं? जैसे देखो हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको बोलते हैं ना पुलिस ऑफिसर, उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, उनको बोलते हैं क्षत्रिय। पहले के जमाने में राजा के जो सैनिक होते थे, राजा होते थे, वो सब पता, वो सब को बोलते थे क्षत्रिय। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय थे। वैसे यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट थर्ड में कौन से हैं? जो लोग काम करते हैं ना, जो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं, यहाँ पे हल चला रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? इनको मर्चेंट क्लास बोलते हैं। आवाज जा रही है ना? उसको वैश्यस बोलते हैं। और द लास्ट वन विच इज शूद्रास, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं ना, जो लेबर वाला वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं शूद्रास। तो ऐसे करके ना भगवान 4 डिवीजन किए थे, ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। तो ऐसे ही कोई भी ना अपने कर्म के अनुसार से उनको डिवाइड करते हैं, ना कि जो ऐसे कोई पैदा होकर नहीं। I think everybody can hear me, right? And this is problem with you only. So please try to check with your mic and speakers. Okay, so we'll move to the next sloka. 4.34. Tad vidhi pranipatena परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास् तत्त्वदर्शिना. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. यहाँ पे ना इस श्लोका के थ्रू 4.34 श्लोका के थ्रू भगवान बता रहे हैं क्या, कि कैसे हमें ना एक गुरु को अप्रोच करना चाहिए, कि स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे हम अप्रोच करते हैं। सो हियर इट इज एक्सप्लेन, इंक्वायर हिम सबमिसिवली, हमें बहुत ही नम्र भाव से, बहुत ही ह्यूमिलिटी के, हम्बली हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को हमें अप्रोच करना चाहिए, और हमें सर्विस करना चाहिए। जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, उनको हमें सर्विस देना चाहिए। और क्यों हमें स्पिरिचुअल मास्टर को करना चाहिए? क्योंकि दोस्त the spiritual masters who are following the guru disciplic succession, they have realized this knowledge. They are called, यहाँ पे लिखा हुआ है, they are called self realized souls. And those who are self realized, they can only impart knowledge. They can only give knowledge to us whatever they have realized. So that is why we should always approach a spiritual master very submissively. And also two very important things, that we should always render service to the spiritual master. So always try to serve our spiritual master, and very humbly we should approach spiritual master. We should ask question. Asking question is not bad, it's always good, but we should ask very submissively, very humbly. And important is render service. Very important to serve our spiritual masters, just like we serve God. We should always try to serve a spiritual master. यहाँ पे ना आप यहाँ पे फोटो के थ्रू देख सकते हो क्या, कि the spiritual master is explaining the truth to the prospective disciples. One disciple is fanning the spiritual master, while the background some disciples are doing service. So here you can see that here the guru, his spiritual master is explaining, giving knowledge to the disciples. So one disciple is fanning, he's fan इनसे फैनिंग कर हवा गुरु अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे है ना स्पिरिचुअल गुरु, और एक बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इनको, अपने गुरु को। तो ऐसे ही ना हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए वेरी सबमिसिवली, एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रेंडर सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने देखा क्या कि कैसे हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए और हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सर्व करना चाहिए. हमें ऑलवेज सर्विस एटीट्यूड रहना चाहिए. हमें कैसे सर्व करते हैं ना, हम अपने घर में बड़ों को हमें सर्व करना चाहिए, सेवा करना चाहिए ना, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को सेवा करना चाहिए. देन इट्स वेरी गुड. दैट्स वे वी शुड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर्स. और यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वन कैन सैटिस्फाई द स्पिरिचुअल मास्टर बाय हैविंग ए सबमिसिव एटीट्यूड, मेकिंग हम्बल इंक्वायरीज, listening attentively, following his instructions carefully, and serving him as a menial servant. He will then surely bless such a sincere disciple with transcendental knowledge. तो हमें क्या करना चाहिए? Very important. What? हमें कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? सबमिसिव. हमें गुस्सा होकर नहीं पूछना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से क्वेश्चन. हमें बहुत ही हम्बल इंक्वायरी करना चाहिए, और हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए जो भी बताते हैं ना हमारे स्पिरिचुअल मास्टर उसको. और उनको जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं ना, वो हमें बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए.
और हमें हर समय ना हमें सेवा भाव से रहना चाहिए. So these are the some of the important slokas of the first chapter of Bhagavad Gita that we have discussed today, and we also discussed the third chapter also. So now I would like to take questions. So anybody, if you have questions, please write down, or you can raise your hand. I will call out your names, then please you can ask your questions now. Sir, what is the meaning of Can you repeat yourself? Sir, what is the meaning of pious? Pious means pavitra, shuddha vyakti, shuddha. Hare Krishna, am I audible? Yes, sir. Yes, Palak. Sir, from where we can get this PDF? So we have shared the link in the group chat here, so you can follow this link and you can get the book. Okay, sir. Yeah. Sir, what is the meaning of spiritual master? Okay, so spiritual masters means जो हमें ना जैसे हमारे स्कूल में हमारे टीचर होते हैं ना, we all have teacher, right? We study, we go to schools, we go to tuitions, so we all have teachers in the schools. Similarly, so when we learn this spirituality, हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं ना, when we try to attain knowledge about the scriptures, so that's whoever gives this knowledge and who is coming from the guru disciplic section, those are called spiritual master, bona fide master. Got it? Yes, sir. Okay, next question. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. Yes, Ayush. सर वो मुझे एक डाउट था कि आपने थोड़ी देर पहले एक श्लोका में कहा कि वो भगवान ने चार डिवीजन करे इंसानों के. उसमें लेकिन भगवान ने तो सबको एक ही भेजा था, वो तो इंसानों ने ही चार डिवीजन करे हैं. नहीं 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 नहीं, इंसानों ने नहीं कराया है, भगवान ने 4 डिवीजन किया है. कौन कौन से 4 डिवीजन थे आपको याद है? सर वो याद है. हाँ, तो हमने देखा था. किसी को याद है कौन से 4 डिवीजन थे? Yes, sir. या संस्कृति? Kshatriya, Vaishya, Shudra. हाँ, very nice. So these were the 4 categories, that भगवान, Krishna has divided our society. हम लोगों ने नहीं किए हैं, भगवान ने ये 4 डिवीजन किए थे. Okay? Okay, sir. Yeah. Anybody else? No, sir. Sir, can you tell also the meaning of bondage? Okay, bondage means बंधन, बंधन. Do you know what is बंधन? हम जुड़े रहते हैं किसी चीज से, Yes, sir. जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, तो हम दोस्त से बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, बहुत जुड़े रहते हैं दोस्तों से. Yes, sir. Yeah, so it's Excuse me, just sir. सर और भाई बहनों से भी. Excuse me, sir. who is this? सर विदुषी. Yes, विदुषी. सर मैं पूछना चाहती हूँ, जो श्लोक होगा कंपटीशन में, तो इसको हिंदी में बोलना है बच्चों को कि इंग्लिश में बोलना है? कैसे? श्लोका संस्कृत है ना, तो हाँ जी, नहीं जैसे आपने मीनिंग दिया है तो उसको किस तरह से इनको एक्सप्लेन करना है? आई थिंक कि आप लोगों को ना हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है, हिंदी में ही देना है. जी जी. सर जो क्विज है, क्विज हिंदी में होगा या इंग्लिश में, और ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं? तरुण प्रभु, आई थिंक ये इंग्लिश में होगा ना, 6 to 10 years वालों को सारे. तरुण प्रभु, हरे कृष्णा. एक्सक्यूज मी सर, क्विज जो है वो ऑप्शनल होगा क्या? नहीं, आई थिंक आप लोगों को ना इस क्विज भी इंग्लिश में होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे क्या उसमें? that details will be shared later. I think right now we haven't decided that. We'll inform you. We'll inform you. Okay, sir. No problem, sir. Yeah. Thank you. Excuse me, sir. Yes. सो जो ऐसे होने वाला है वो संस्कृत में ही होगा?
नहीं 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 नहीं, आपको हिंदी सर और इंग्लिश होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस आयुष। मैम सर व्हाट इज demigod? व्हाट इज डेमीगॉड? यस सर। ओके, कोई जानते हैं? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? व्हाट इज डेमीगॉड? किसी को पता है आप लोगों में से? No, sir. ओके, नोबडी। ओके, सो आई विल टेल यू। सो डेमीगॉड्स उनको बोलते हैं ना, देवी देवताओं को बोलते हैं डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स मतलब देवी देवताओं। भगवान है ना, वो सुप्रीम लॉर्ड है। उनके अंदर जैसे ना, हम आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे स्कूल होते हैं ना, आप लोग स्कूल जाते होंगे ना, तो आपके स्कूल में क्या होते हैं? डायरेक्टर होते होंगे, फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, राइट? आप लोग के स्कूल में होते होंगे ना। जैसे और भी अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, राइट? तो जो प्राइम मिनिस्टर्स है ना, जो प्रेसिडेंट है ना, वो हो जाते हैं, हम समझ सकते हैं उनको एक जो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट को, वो हमारे सुप्रीम होते हैं ना, सबसे ऊपर होते हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत सारे हमारे डिविजन्स होते हैं ना, ये मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स एंड कॉर्पोरेशन, सो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं ना। सो दे हैव फॉर दैट दे आर असाइंड डिफरेंट मिनिस्टर्स। सिमिलरली हमारे भगवान अकॉर्डिंग टू द वर्क और एक्टिविटीज, दे हैव गिवन रोल्स। जैसे कि इंद्रदेव, हमें पता है क्या करते हैं? बारिश करवाते हैं, वो इंद्रदेव हो गए। फिर क्या होता है? वायुदेव हो गया, वो हमें हवा देते हैं, तो उनको वायुदेव बोलते हैं। फिर हमारे सूर्य भगवान होते हैं, वो हमें क्या देते हैं? लाइट्स देते हैं। तो ऐसे करके ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेमी गॉड्स होते हैं, उनको बोलते हैं देवी और देवता। ओके आयुष, क्लियर? ओके सर। ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। यस अनाया। सर एक्चुअली ये श्लोका चैंटिंग में मीनिंग भी समझाना है या ओनली श्लोका चैंटिंग करना है? श्लोका रिसाइटेशन में यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स। ओके, ओनली श्लोका चैंटिंग। ओके, या श्लोका रिसाइटेशन, या व्हाटएवर यू आर गिवन उसमें से ही करना है सर, या कोई हाँ, अध्याय लेके हमें करना है? आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही रहेंगे जो यहाँ पे है, बट यू कैन फॉर बेटर इट विल बी गुड इफ यू कैन गो थ्रू द अदर श्लोकास आल्सो फ्रॉम द भगवद गीता। आई मीन टू से कि मैं पर्टिकुलर कोई अध्याय जैसे पंचोदश नहीं नहीं अध्याय नहीं, हुआ पूरे वैसे ले सकते हैं क्या सर? पूरे नहीं 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 नहीं, पूरे 18 चैप्टर्स रहेंगे। तो आप लोगों को दिया जाएगा कोई एक कि आप लोग रीड कर सकते हैं, आप इसको रिसाइट कर सकते हैं। ओके, रिसाइट मतलब मेमोराइज करके करना है ना सर? हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर। Last Mahabharata questions in the quiz competition. Excuse Sorry me, sir. Anupama, I couldn't hear you. Can you come? Sir, they will ask Mahabharata questions of Krishna when he born, that questions, or something other questions in quiz competitions. No. Whatever it's mentioned, you must have given guidelines. If you have not received guidelines, please refer to the website, the Gita Anushilam. You will find all the details of the, competitions. So please go through that. There is Okay, sir. a Thank link, you. yeah. So you can go through the website. Excuse me, sir. Yes, Preeti? Thank you. सिलेबस में जो दिया है उसे ही प्रैक्टिस करना है। बस। एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर जो हमारा ऐसे होगा उसमें हमें टॉपिक दिया जाएगा या? नहीं, आपको टॉपिक दिया जाएगा most probably. Please go through all the participants. Please go through the guidelines. There is a guidelines that is mentioned in the link, website. Please go through the guidelines. It is there. Everything is there. Okay. Any questions? Yes. Yes, sir. Yes. Sir, is there any limit in reciting the श्लोक होगा उसमें संस्कृत पूछा जाएगा? नहीं, आपको बस रिसाइट करना होगा। तरुण प्रभु, आर यू देयर? तरुण प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। आपका ये आ गया, लाइट आ गया घर पे? हाँ प्रभु जी, आ गया। चलिए बढ़िया है, बच्चे भी आपको देख पाएंगे फिर तो हो गया क्या? क्लास हो गया?
हाँ हाँ प्रभु जी, हो गए। कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हो गए। तो अब कुछ कंप्लीट। लोग ना कॉन्टेस्ट रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है, कॉन्टेस्ट क्विज के वगैरह के बारे में। क्या क्या क्वेश्चन है? क्विजेस के वगैरह में जैसे बोल रहे थे कि रिसाइट करना। बहुत सारा इको हो रहा है। हाँ मेरे तरफ से है क्या हाँ इको? प्रभु, हाँ प्रभु, आपकी तरफ से थोड़ा ईयरफोन लगा लीजिए आप। रुकिए, आप बताइए, अभी सही है? हाँ प्रभु जी, आई थिंक हाँ बढ़िया है। तो इन लोगों को डाउट ये था कि हम लोगों को पूरा 18 अध्याय हमें पढ़ना पड़े कि रिसाइट करना होगा, कि जो इलस्ट्रेशन भगवत गीता है उसी वाला रहेगा, पर उतना ही। नहीं नहीं, रिसाइटेशन इलुस्ट्रेटेड भगवत गीता से नहीं है। रिसाइटेशन के लिए तो श्लोका रिसाइटेशन का अलग है। अब 6 से 10 ईयर के लिए चैप्टर 2 का श्लोका 7 से 27 है। ओके, वो मेंशन है ना गाइडलाइंस में? गाइड में मेंशन है, हाँ हाँ, मैं हाँ। वही बताया इन लोगों को कि आप लोग प्लीज गो थ्रू द वेबसाइट एंड यू विल गेट द गाइडलाइंस। एक बार वेबसाइट देखना पड़ेगा क्योंकि सारा व्हाट्सएप पे तो गाइड